Hello children. Now some of you have asked the difference between reflexive pronoun and emphasizing pronoun. Since it was not clear to you all, I told you that I will make a separate video explaining the difference in both. So here comes the video. So in this video we will study how reflexive pronoun is different from emphasizing pronoun. Okay? So we know that the words for reflexive pronoun and emphasizing pronoun are the same. They are himself, herself, myself, itself. These are the words. Okay. So the very first thing that we will study in this video is reflexive pronoun. So what is a reflexive pronoun? In a reflexive pronoun, what happens that the action that is happening in the sentence, it reflects back to the subject और द डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का? जो एक्शन कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है ना. तो जो एक्शन होता है सेंटेंस में, जो भी काम हो रहा होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक होता है, वापस आता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर वी सी आवरसेल्व्स, राइट? So it is the reflection of how we look that we see in the mirror, right? Similarly, similar is the reflexive pronoun. Now look at the examples. It will make the reflexive pronoun clear. The first example is Raman hurt himself. Okay, we will question whom did Raman hurt? Raman ने किसको hurt किया? The answer is himself. And whom does himself refer to? It refers to Raman. ओके, हिमसेल्फ किसके लिए कहा गया है यहाँ पे? रमन के लिए. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ. होम डिड द प्रिजनर हैंग? हिमसेल्फ. यहाँ पे भी हिमसेल्फ वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? प्रिजनर के लिए. ठीक है. तो हिमसेल्फ हियर रिफर्स बैक टू द subject, isn't it? So when we question whom did the prisoner hang, किसको hang किया prisoner ने? Himself, मतलब खुद को. So it is reflecting back to the subject. I blame myself for it. Whom do I blame for it? Myself. Okay, so here also you can see that this action, that is blaming, reflects back to the subject, that is myself. Okay, the next example is she put herself into trouble. Whom did she put into trouble? Herself. Okay, so किसको trouble में डाला उसने? खुद को. The next is the dog hurt itself. Whom did the dog hurt? Itself. Now children, in reflexive pronoun what happens that the action reflects back to the doer, as I have told you. We get the reflexive pronoun as the answer on raising the question whom. So in all these examples that I gave you, you saw that when I put the question whom, I get the answer which is herself, itself, himself. Okay, we get the reflexive pronoun as the answer on raising the question whom. जब question पूछते हैं whom, तो आंसर हमारा क्या होता है? जो reflexive pronoun होता है वही आंसर होता है. अब emphasizing pronoun क्या होता है? We only emphasize the subject by using emphasizing pronoun. Okay? जब हम emphasizing pronoun यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ सब्जेक्ट को emphasize करते हैं. ठीक है. और अगर हम क्वेश्चन रेज करेंगे whom emphasizing pronoun के साथ तो हमें आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है. तो जहाँ आंसर मिलेगा वो होगा reflexive pronoun, जहाँ आंसर नहीं मिलेगा वो होगा emphasizing pronoun. Okay. Now another thing about emphasizing pronoun is like in reflexive pronoun the dog hurt itself. अगर मैं यहाँ से itself हटा देती हूँ, the dog hurt, then the sentence is incomplete. It does not make complete sense. But in emphasizing pronoun, if I remove the emphasizing pronoun from the sentence, it will still make complete sense. For example, I myself was there. Okay, here if I remove the word myself, I was there, it makes complete sense, isn't it? And if I raise the question whom का कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है. He myself told me this. Whom? कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है. So here myself and himself, these are emphasizing pronouns. Now the words myself and himself, if removed from the above sentences, will not affect the accuracy of the sentence. See, I was there, he told me this. Their sentences are absolutely fine. Similarly, the tree itself fell. You must do it yourself.
she herself insulted her friend. Okay, so in these sentences, what happens that you can see the tree fell. You must do it. She insulted her friend. All these sentences are complete without itself, yourself, and herself respectively. Okay, so you can see that in emphasizing pronoun, what happens that if you remove the emphasizing pronoun from the sentence, still the sentence will make complete sense, and if we put the question whom, we will not get an answer. Whereas in reflexive pronoun, what happens that when we raise the question whom, we will get an answer and the sentence is incomplete without the reflexive pronoun. Okay, now another thing which is very important about reflexive pronoun and emphasizing pronoun is this. Okay, what is this? You can see self is a singular word. It is used with singular words which are him, her, it, योर एंड माई. सेल्फ एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, तो वो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड माई सेल्फ के साथ यूज़ होता है. मतलब हिम, हर, इट, योर एंड माई के साथ यूज़ होता है. लेकिन सेल्व्स इज़ अ प्लूरल वर्ड. सेल्व्स एक प्लूरल वर्ड है और वो प्लूरल वर्ड्स के ही साथ यूज़ होता है. दैट इज़ देम, आर एंड योर. व्हेन आई से देम, इट मीन्स बहुत सारे लोग, आर मीन्स हम सब, है ना, एंड योर. नाउ योर इज अ वर्ड विच यू कैन यूज फॉर अ सिंगल पर्सन एज वेल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है. व्हेन आई से दैट इज दिस योर पेन, तो मैं किसी एक इंसान के बारे में बोल रही हूँ. इज दिस योर पेन, या फिर इफ़ आई से यू हर्ट योर सेल्फ, तो मैं किसी एक इंसान से बात कर रही हूँ एंड आई एम टेलिंग हिम और हर दैट यू हैव हर्ट योर सेल्फ. बट इफ़ आई एम इन अ क्लास एंड आई से डू योर वर्क योर सेल्व्स, मतलब आप सब अपना काम खुद करो, तुम सब अपना काम खुद करो. ओके, सो हियर इट refers to the plural part. So your word can be used in singular as well as in plural, but him, her, it and my is always used with self, and them, are and your are always used with them, are always used with selves, and your can be used with both. Now that was about reflexive pronoun and emphasizing pronoun. आई होप इसके साथ तुम लोग की जितनी भी क्वेरीज थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में, जो भी आप लोग ने गूगल मीट में बताया था, वो सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.